and welcome back to my channel Psychology with Vicha. I am a psychology educator and today we are going to do the second research based paragraph question that has come in December 2012 of UGC-NET GRF. So let's get started. The concept of variable is of central importance in research. Obviously, variable is very important. Without variables, there is no research, right? In psychological research, variables can be classified in several ways. We know that variables are differentiated in many ways. Edward was classified variables in 3 types. So Edward has classified variables in how many types? 3. Which were stimulus variable, behavioral variable, and organismic variable. From another perspective, variable has been classified into 2 types. अब 2 और types हैं. एक बोलते हैं हम continuous variable and एक बोलते हैं discrete variable. And discrete variable then further classified into real discrete variable and artificially discrete variables. The variables in research can be defined in various ways. The 2 most common type of definition being constitutive definition and operational definitions. So variables को हमें define भी करना होता है ना. So 2 type की definition होती है. एक होती है constitutive and the second is operational. The operationalization of variable is of crucial importance in carrying out actual research. The tentative statement of expected relationship between 2 or more variables are called hypotheses. The research hypotheses may be directional or non-directional. Needless to say that the hypotheses constitute the powerful tools of psychological research. So basically इस paragraph में हमने variables की बात करी. Variables में इन्होंने एक हमें बताया stimulus, organismic, and इन्होंने हमें बताया है behavior. Then उन्होंने फिर हमें वापस से bifurcate करा है discrete and continuous में. Discrete भी artificial discrete होता है, real discrete होता है. Then he talked about definitions of variable, which is a constitutive and operational, and then he talked about hypotheses. Okay? So let's come to the questions now. Which of the following variables can be labeled as organismic variables? इनमें से कौन सा organismic variables है? आप लोग pause करना and then answer. Try to answer. If not, then obviously I'm explaining here. So first off, हम पहले समझते हैं कि ये सारे वेरिएबल्स होते हैं क्या है जो एडवर्ड ने हमें बताए. स्टिमुलस वेरिएबल होता है, पता चल रहा है नाम से, स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक जो बता रहे हैं. सो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, जो मुझे टास्क असाइन हुआ होगा, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो स्टिमुलस होगा. एंड स्टिमुलस का टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मुझको बता रहे कि टास्क जो था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था, हार्ड था. तो दिस वुड बी माय स्टिमुलस वेरिएबल सिंस इट इज टेलिंग मी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिमुलस. ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होता है जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म होता है, हम लोग होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इंटेलिजेंस पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस. बी, अच्छा, ऑल्सो दिस इज एमएसक्यू. सो इन गेट एग्जाम्स आपको ऑप्शंस ऐसे देते हैं एंड आंसर एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी सही हो सकता है. एमएसक्यू का मतलब यही होता है. ठीक है. एरर मेड व्हाइल लर्निंग टास्क, ये जो होता है आपका बिहेवियरल वेरिएबल होता है. बिहेवियर, अगर मैं किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, उसके परफॉर्मेंस को मैं देख पा रही हूँ, वो हमारे होंगे बिहेवियरल वेरिएबल्स. सो एरर्स मेड व्हाइल लर्निंग टास्क, बिहेवियर है मेरा, पार्टिसिपेंट का बिहेवियर है जो वो एरर्स कर रहा है, राइट. दिस इज बिहेवियरल वेरिएबल. एंड हार्ट रेट, अगेन दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, राइट. सो इंटेलिजेंस एंड हार्ट रेट इज द करेक्ट आंसर. Second question is, which one of the following is an example of artificially discrete variables? इनमें से कौन सा artificially discrete variable है? Since यहाँ पे MSQ नहीं लिखा है तो यहाँ पे एक ही सही आंसर है. ठीक है. Now first of what is discrete variables? Discrete variables basically dichotomous variables होते हैं. Now what is dichotomous variables? जिसके 2 ही ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. जैसे कि आपका सेक्स या फिर जेंडर, मेल होता है या फीमेल होता है, right? I'm talking about biological sex here. Okay? So या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसमें कोई नंबर्स हिडन थोड़ा है, नहीं है ना. So this is real discrete variable. Nationality, either you are Indian, you are American, or you are Hispanic, or someone else, right? Again, having a nationality doesn't mean that there is any hidden number. राइट. तो जहाँ पे भी हिडन नंबर नहीं है, सिर्फ लेबलिंग है, वो होते हैं आपके discrete variable. So nationality is a discrete variable. Number of children in the family,
अब यहाँ पे तो नंबर खुद ही बोल दिया उन्होंने, नंबर्स आते ही जब मैं 1 2 3 ऐसे होल नंबर्स में मैं कर सकती हूँ तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल तो है ही नहीं। Now examination result in terms of pass and fail. Now although यहाँ पे दो options हैं, right, pass and fail, and also यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि लेबलिंग ही है, but how am I justifying whether you have passed or failed? हिडन नंबर है, 100 में से अगर आपके 33% आ गए हैं तो आप पास हो जाते हो, बिना तो फेल हो जाते हो। तो हिडन नंबर है ना पीछे पास और फेल के, सो इसका आंसर होगा डी, आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल्स। Which of the following is our operational definition of intelligence? Now operational definition का मतलब क्या होता है, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन योर रिसर्च। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि व्हाटएवर वेरिएबल यू हैव टेकन, ठीक है, कोई सा वेरिएबल जो भी आपने लिया है आप उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, कौन से डेफिनेटिव टर्म्स से आप उसको मेजर करें, whether you are using a psychological test, whether someone is observing and rating, how are you actually measuring your variable? That is basically your operational definition. MSQ है तो यहाँ पे एक भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इंटेलिजेंस रेटिंग्स बाय एन ऑब्जर्विंग साइकोलॉजिस्ट, क्लियरली मैं बता रही हूँ कि मैं इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ कि जो भी मेरा साइकोलॉजिस्ट है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो अपनी रेटिंग्स देगा, उसके अकॉर्डिंग आई measure my intelligence. So this is one of the operation definition, right? Intelligence as an ability to think critically, solve problems and adapt to novel situations. Now, ऐसे मुझे पता चल रहा है मैं कैसे कर रही हूँ, ये तो proper definition है ना, this is the definition, right? So ये मेरा operational definition है, मेरी theoretical definition है. Now, intelligence as a score of Raven's progressive matrix. Now again मैं कैसे इंटेलिजेंस मेजर कर रही हूँ, जो मेरा आरपीएम में स्कोर होगा उसके थ्रू। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑपरेशन डेफिनेशन। टेल मी इन द कमेंट्स कि आरपीएम कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मेजर करता है, ओके। नाउ मेल्स आर मोर एक्सट्रोवर्टेड देन फीमेल्स, एन एग्जांपल ऑफ, मेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं देन फीमेल्स, ये किस चीज का एग्जांपल है, इज इट अ नल हाइपोथेसिस? नो, बिकॉज क्लियरली मेरे को यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है कि मेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड है फीमेल से, क्लियरली देयर इज अ रिलेशनशिप। नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, सो ये तो नल हाइपोथेसिस हो नहीं सकता, डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है कि मेल्स ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड है देन फीमेल, सो देयर इज अ डायरेक्शन, सो इट इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी कुछ नहीं होता। Which of the following represents statistically correct versions of a hypothesis? इनमें से कौन सा hypothesis जो है वो सही से लिखा है? To study the relationship between intelligence and academic achievement. Now, जैसे ही हम ऐसा sentences बनाते हैं, this is my objective. मेरा research का objective क्या है? मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे relationship देखना है intelligence and academic achievement. ये hypothesis नहीं है, ये objective है. Is there a relationship between intelligence and academic achievement? Question mark. क्या मेरा hypothesis कभी भी question form में होता है state? No, my hypothesis will always be an affirmative statement, and it will always be in future tense. ठीक है? Intelligence and academic achievement are positively correlated. Correct? ये ऐसे हम hypothesis बना सकते हैं कि intelligence and academic achievement जो है वो positively correlated है. And intelligence and academic achievement are unrelated. Again, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा null hypothesis हो गया, and this is my alternative hypothesis. Both are correct. And with this, today's question is over. I hope you understood what variables are according to Edward, what continuous discrete variables are. Apart from that, what is operational definition, and also again how to write a hypothesis. Stay tuned for the next question. I'll be uploading that tomorrow. Bye.